बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल टू अमेज़न स्टडी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। इनका लॉन्ग क्वेश्चन 1 है हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ साइंस, बिकॉज इन दोनों में केमिकल कंपाउंड को स्टडी किया जाता है। जैसे कार्बन कंपाउंड, ये जो कार्बन है हमारे पास, ये लिविंग थिंग्स का मेन कंपोनेंट, ये की एलिमेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन बेस्ड कंपाउंड को स्टडी किया जाता है, जैसे कि नेचुरल या मैन मेड कंपाउंड्स। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एसिड्स वगैरह के बारे में स्टडी भी इसी में किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री क्या एक स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन है, इसी ब्रांच जिसमें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसमें जैसा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एंजाइम, हार्मोन्स एंड डीएनए वगैरह की स्टडी। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। फर्स्ट, इनका रिलेशन जैसे कॉमन एलिमेंट्स हैं। बोथ फील्ड स्टडी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ऑल मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। लिविंग प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन्स एंड हेल्थ, organic chemistry helps to create medicines, while biochemistry studies how these medicines affect the body. Then biomolecules, biochemistry studies the structure and function of biomolecules, जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड, जबकि इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोवाइड बेसिक नॉलेज नीडेड टू अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री। Without organic chemistry, we cannot study the chemical nature of life. So both branches are deeply connected and support each other in understanding how life works on chemical level. Question number 2 है justify that industrial chemistry is development of an organic chemistry. Industrial chemistry deal with the large scale production of chemical used in daily life. Just most of these chemicals are inorganic, जैसे कि एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, मेटल एंड फर्टिलाइजर। डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रियल प्रोसेस डायरेक्टली सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनकी जस्टिफिकेशन देखी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन। केमिस्ट स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन विच डेवलप्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन एसिड्स की स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस, ईटीसी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। खाद बनाने में भी कैसे बनती है खाद। इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट आर मेड थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। रिसर्च फॉर बेटर फर्टिलाइजर स्ट्रेंथन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर extracting metals, iron, copper, aluminium depends on study of inorganic compound found in ores. This increases knowledge in organic chemistry. Development of new materials. Industries need strong, heat resistant and corrosion resistant inorganic material. This demand lead to further research and advancement in inorganic chemistry. Therefore, industrial chemistry play a key role in improving methods, discovering new compounds and expanding the field of inorganic chemistry. Then है question number 3, differentiate between science and technology. Science and technology are two closely related fields, but they differ in their purpose and application. Science is systematic study of nature and natural phenomena. It aims to discover facts, principles, and laws through observation, experimentation, and logical reasoning. The main goal of science is to increase our knowledge and understanding about the world around us. For example, learning how plants prepare food, how objects fall due to gravity, or how electricity flows in circuit are all parts of scientific study.
जबकि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कि जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली हमने कैसे अप्लाई करना है और ह्यूमंस से रिलेटेड जो ह्यूमंस के प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करना है और डेली लाइफ को इम्प्रूव करना है, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी में आ जाता है। टेक्नोलॉजी uses the principles discovered by science to create tools, machines, devices, and methods that work easier, faster, and more efficient. Examples include mobile phone, computers, engines, medical machines, fertilizer, or different mode of transportation. Technology cannot progress without scientific discoveries. Science mainly answer why does this happen. कि साइंस सिर्फ यही इसके बारे में बताता है why does this happen, कि कोई भी चीज़ है क्यों हो रही है। While technology answers how can we use this knowledge for human benefit, कि जो भी हमारे पास नॉलेज हम उसको ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस डील विद डिस्कवरीज एंड एक्सप्लेनेशंस बट टेक्नोलॉजी डील्स विद इन्वेंशंस एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। साइंस improves understanding while technology improves living standards. Science provides basic knowledge, technology applies this knowledge in useful ways, both work together and essential for the progress of society. Then है question number 4. How can you justify this that polymer chemistry is derived from organic chemistry? Polymer chemistry क्या है? The branch of chemistry in which study of large molecule called polymers, which are made by joining many small units called monomers. Since most monomers and polymers are made up of carbon-containing compounds, polymer chemistry is closely connected to organic chemistry. Organic chemistry helps us understand the structure, properties, and reaction of these compounds because of their close relationship. Polymer chemistry is derived from principle and knowledge of organic chemistry. First of all, polymer chemistry is based on carbon compounds. Most polymers are formed from carbon-containing compounds. Organic chemistry studies these compounds, these carbon molecules and their behavior, which are building blocks of polymers. Therefore, polymer chemistry depends on organic chemistry as its foundation. Monomers are organic molecules. Polymers are made by linking many small molecules or small units called monomers. These monomers, जैसे कि इथेन, propene, styrene, are organic compounds. Understanding the reaction and bonding comes from organic chemistry, showing a direct link between two fields. Properties of polymer depend on organic structure. The physical properties of polymer, जैसे कि strength, flexibility, and melting point, depend on structure of their organic monomers. Organic chemistry explains how changes in carbon chains or functional group affect these properties, helping in designing better materials. Polymerization reactions are organic reactions. The two polymerization method, addition and condensation polymerization, or organic reaction. These methods are derived from organic chemistry and used to make synthetic polymer like polyethylene, PVC, and nylon. Polyethylene, PVC, and nylon. Number 5, natural polymers are organic compounds. Many polymers, just like cellulose, starch, proteins, natural rubber, are organic substances. Their study began within organic chemistry and later expanded become polymer chemistry. Polymer chemistry derived from organic chemistry because polymers and their monomers are organic compounds because they contain carbon-containing compounds. The reaction structure study in organic chemistry provides the basis for understanding and creating polymers. यहाँ तक ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग and joining us. Like, share and subscribe our channel Self Amazon Study. Thank you. Allah Hafiz.